हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके शॉर्ट हैंड प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 32 फ्रॉम द मैगजीन स्पीडोग्राफी बाय डॉक्टर जी.डी बिस्ट वॉल्यूम 1। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और सीखते हैं न्यू आउटलाइंस और फ्रेजेस। चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से। इट वॉज फेल्ट दैट एन अथॉरिटी, इसको हम लिखेंगे फ्रेंड्स। इट वॉज फेल्ट फेल्ट दैट एन अथॉरिटी which may be called upon to deal with question, to deal with एक साथ लिख लेंगे, questions इस तरीके से आ जाएंगे, और क्वेश्चन को आप क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, such as the question, such as the इसके साथ ही लिख लेना है हमने एक साथ, such as the question whether the teacher has been wrongfully removed the matter has to be dealt with so far as को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और so far as को इस तरीके से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। The management is concerned and the university को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यूनिवर्सिटी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। has to deal with the management, एक साथ लिख देंगे मैनेजमेंट, और whether something has been done by the management or the governing body which is not in the best interest, एक साथ लिख लेंगे, in the best interest of the university, full stop. A body like this which is going to deal with such cases must have college teachers on it, full stop. Therefore this was a move which in my humble opinion, एक साथ ही लिख लेंगे, और humble opinion was a correct move, comma, a move in the proper direction, comma, a move in the proper direction, and it would have created, एक साथ ही लिखेंगे, ये पूरा एक साथ लिखेंगे फ्रेंड्स हम, and it would have created a situation if it had already started functioning when the teachers of the colleges themselves would be partners in planning out एक साथ लिख लेंगे, what arrangements have to be made, full stop. having said को इस तरीके से लिख लेंगे एक साथ पूरा, having said this, comma, I would like to make इसके साथ पूरा एक साथ में हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक ही फ्रेज में, और I would like to make इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। one further observation on a point which has been
made by the honorable member, by the honorable member, honorable member इस तरीके से भी लिख सकते हैं, honorable member इस तरीके से भी लिख सकते हैं, full stop. Apparently the way some of the functionaries, the way some of the functionaries एस की हुक जो है वो हमारी इस तरीके से जाएगी, functionaries of the Delhi Teachers Association have been talking has misled the honorable members, comma, if I may most humbly point it out, full stop. Government's position, as I have stated very clearly, is that the definition of a teacher of the degree डिग्री को हम बनाएंगे डी के साथ इस तरीके से, डिग्री बनाएंगे डी, इसके साथ जी के साथ की हुक लगा के डिग्री, कॉलेज एज गिवन अंडर द डिग्री, कॉलेज एज गिवन अंडर द एक्ट इस तरीके से लिख लेंगे, इज एक्सेप्टेड इस तरीके से लिख लेंगे, by the government and government has no intention of modifying it, full stop. The definition says that a teacher of a college, the definition says that a teacher of a college means a person appointed for the purpose of imparting instructions in any college, full stop. Now comma all members of the academic council are teachers, full stop. It is an artificial way to create dichotomy इस तरीके से बनाएंगे, dichotomy, and I do not इस तरीके से लिखेंगे, want इस तरीके से, I do not want to do it, full stop. It seems all the people who came, who के साथ came एक साथ लिख देंगे हम, came इस तरीके से लिखेंगे, who came to see the honorable member wanted to have their cake and eat it too, full stop. You cannot say that only college teachers are teachers and others are not teachers, and some of them put forward the argument that no, comma, we feel you wish इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, और you wish अलग अलग भी लिख सकते हैं, you wish to delink the college,
कॉलेज डी लिंक के साथ ही हमने लिख दिए कॉलेज फुल स्टॉप। द एक्ट इज वेरी क्लियर ऑन दैट पॉइंट फुल स्टॉप पैराग्राफ चेंज। लास्ट हमारे पास जो पैरा है वो है सर कॉमा आई हैड समथिंग टू डू with the drafting of the report and I was a signatory इसको हम लिखेंगे signatory इस तरीके से signatory to this report full stop close। so friends, ये था हमारा शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन स्पीडोग्राफी मैगजीन का एक्सरसाइज नंबर 32। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी इसकी ट्रांसक्रिप्शन। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आप अपने डाउट्स वगैरह मेरे से मैसेज में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके फॉलो कर लें मुझे टेलीग्राम पे भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस शॉर्ट हैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।